भी यात्रा का एक कितना सुंदर वर्णन आदरणीय श्री प्रकाश जी के श्रीमुख से सुना। अब उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अनिर्बान जी से आगे का वर्णन सुनेंगे। नमस्कार, पधारें। धन्यवाद अतुल जी। मेरा एक जो विडंबना है वो है कि मेरा हिंदी इतना परिपक्व नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं औपनिवेशिक मानसिकता से तो मुक्त हूँ, पर हिंदी में थोड़ा कठिनाई होता है। मैं हिंदी सीख रहा हूँ और 3 लैंग्वेज क्यों 5 लैंग्वेज फार्मूला में भी विश्वास करता हूँ कि मैं, क्योंकि हम जहाँ बड़े हुए हैं वहाँ 5 भाषा सीख के ही बड़े हुए हैं। इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा कि हिंदी इतना मेरा सरल नहीं है, तो I will mix up with your permission. My mentor in the organization, my mentor intellectually, my mentor politically, someone who has actually taught me to contest elections on the ground in a difficult state like West Bengal, someone whose contribution to West Bengal reflects the aspiration that Dr. Shyama Prasad Mukherjee had for the state, and that is the BJP's National Joint General Secretary Organization, Shri Shiv Prakash ji. I am in fact I feel extremely honored, Atul ji, that I could be here today in this very sacred spot on such a historic occasion, and to be sitting by his side. I don't know whether I have the adhikar to sit by his side and to speak in his presence, but I am extremely overwhelmed and honored for the honor that you have given me. Our leader on the floor of the house, my dear friend Nikhil ji, member of the Legislative Assembly Amit Satham ji. I am just 5 days older to him, same month and same year. I'm just 5 days older to him. Professor Kanak Sabhapati ji, Vice President of Tamil Nadu BJP and Secretary Dr. Shyama Prasad Mukherjee Research Foundation. I want to thank all of you for making this possible and for bringing us together here and to remember that historic occasion. अब अतुल जी ने मुझे भी नहीं कहा क्या अपेक्षा है उनसे। वो कल शाम को उन्होंने बोला कि आपको भाषण देना है, सत्र में बैठना है, तो आप मुझे ये भी क्षमा करेंगे कि मैं जो बोलने वाला था या बोलना चाहूँगा, अधिकतर उस विषय भाई साहब ने यहाँ विषय को रखा, और मुझे लगता है कि इतना इंस्पायरिंग उद्बोधन था कि हम सबको ये याद रहेगा और विशेष रूप से कई पहलू, कई आयाम जो निकल के आया है इसमें, ये एक आयाम शोध का विषय भी है और सार्वजनिक कार्यक्रमों का भी विषय है आने वाले दिनों में. Now, I just wanted to draw a few parallels in history. It is very interesting that this year we will be celebrating the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. And we are also commemorating the 60th year of the philosophy, the political philosophy as articulated by Deen Dayal ji, the 60th year of that political philosophy. Now, when standing in Mumbai, we must also draw another parallel, and it's such an interesting parallel. आप देखिए, पहले आम चुनाव, the first general election, उस general election में भाई साहब ने कहा, पंडित नेहरू, the great democrat, who is said to have laid the democratic foundations of India, said that I will crush Janasangh. Shyama Prasad Mukherjee replied to that, saying that I say I will crush that crushing mentality. So this was Nehru and Dr. Shyama Prasad Mukherjee. And not very far from here in Pune, during the first general election, the CPI's a Central Committee member S.A. Dange said, waste your vote but don't vote Ambedkar.
And Dr. Shyama Prasad Mukherjee resigned from Nehru's cabinet on 19th April 1950, and Babasaheb Ambedkar resigned from Nehru's cabinet on 10th October 1951. The reason for Dr. Shyama Prasad Mukherjee's resignation from Pandit Nehru's cabinet, and one of the reasons given by Babasaheb Ambedkar for his resignation from Nehru's cabinet, was similar. And that was the condition of Bengali Hindus in East Bengal, in East Pakistan. Babasaheb in his letter says, there are two grounds which have disturbed our relation with Pakistan. One is Kashmir and the other is the condition of our people in East Bengal. I felt that we should be more deeply concerned with East Bengal, where the condition of our people seems intolerable. Dr. Shyama Prasad Mukherjee resigned from the central cabinet on this issue itself, saying that while we guarantee complete security and complete equality for our minorities, Pakistan is unable to guarantee that for its minorities. This was one of the principal reasons on which Dr. Shyama Prasad Mukherjee, and I'm sure you are all aware that he was India's first industry and supplies minister, resigned. Babasaheb Ambedkar, Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Sardar Patel advocated one common thing, and that is complete exchange of population after partition. And on all three made that demand. Babasaheb made it in 1940. Dr. Shyama Prasad Mukherjee and Sardar Patel made it after independence. And all three demands were rejected by Pandit Nehru. So, one can go on making such parallels. In fact, आप लोगों को ये जानने में भी मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष जब थे, तब महाबोधि सोसाइटी के भी अध्यक्ष वो बने, और 1951 में बाबा साहेब अंबेडकर जब प्रथम महाबोधि बौद्ध विहार दिल्ली में त्रिशरण ग्रहण किया, उस समय महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यानी बौद्ध धर्म प्रचार, बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध का विरासत, भगवान बुद्ध का धरोहर को विश्व के सामने लाना, भारतीयों के सामने लाना, जो संकल्प बाबा साहब ने लिया था, जब उन्होंने लिया उस समय महाबोधि के अध्यक्ष भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो मुझे लगा कि क्योंकि एक ऐतिहासिक संदर्भ में हम लोग हैं, तो आई थिंक दीज पैरेलल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ आई जस्ट वेरी क्विकली, एंड इनफैक्ट यही दादर में 1940 मई में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ, 1940 मई महीने में, और यहीं से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नागपुर पहुंचे मई 1940 में, और वहां पहले बार फॉर द फर्स्ट टाइम ही मेट परम पूजनीय डॉक्टर जी। दे हैड अ वन-on-one डिस्कशन ऑन द कंडीशन ऑफ हिंदूज इन बंगाल। उस समय मुस्लिम लीग का शासन हुआ करता था बंगाल में, और उसी बैठक में परम पूजनीय गुरुजी भी उपस्थित थे, और उस बैठक के एक महीने के अंदर परम पूजनीय डॉक्टर जी का स्वर्गवास हुआ। तो इसलिए इतिहास में अगर हम जाते हैं और अगर संदर्भ ढूंढते हैं, तो मैं तो यह कह सकता हूं कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी पहला इलेक्शन एजेंट थे बाबा साहेब अंबेडकर का, एंड ही बिकेम इलेक्शन एजेंट ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर विथ फुल अप्रूवल ऑफ परम पूजनीय गुरुजी। और जब ऐसे डांगे कह रहे थे कि डोंट वेस्ट योर वोट, वेस्ट योर वोट बट डोंट वोट अंबेडकर, उस समय संघ के प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी संपूर्ण तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर, बाबा साहेब के लिए कैंपेनिंग में लगे थे, और मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और भारतीय जनसंघ ने पहले आम चुनाव में गठबंधन बनाया था। यह इतिहास हमको दोहराना चाहिए, क्योंकि जिन लोग आज बाबा साहेब को पूछते हैं,
उनके जीवित काल में इन लोगों के विचारधारा ने कितना उनको अपमानित किया, ये बीच बीच में हमको लोगों को याद दिलाना चाहिए. नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू सी, इफ यू लुक एट द जनसंघ. जनसंघ का स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में हुआ. 21 अक्टूबर का सिलेक्शन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का घोषणा किया था. और आप सोच के देखिए, इन अक्टूबर 1951 द जनसंघ was founded, and in January 51-52 the first general elections were held. So there was hardly 3 months for preparation, and in that 3 months for preparation, please remember that the entire government machinery, the entire system, the entire structure was pushed behind the Congress system. And Pandit Deendayal Upadhyay ji says something very interesting about the Janasangh. He says, the Janasangh did not have a nucleus formed of disgruntled, dissident or discredited group of congressmen. The Janasangh's inspiration came from those who basically differed from the Congress outlook and policies. यानी जनसंघ का गठन जो आजादी के, स्वाधीनता के 5 साल के अंदर जनसंघ का गठन हुआ, वो जनसंघ का गठन कोई डिसग्रंटल्ड कांग्रेसमैन या दूसरे दल से आए हुए लोगों ने नहीं बनाया था. इट वॉज अ ऑर्गेनिक, स्पॉन्टेनियस, फ्रेश, न्यू इनिशिएटिव undertaken by an Indian leader after independence. And right from the first general elections itself, the Janasangh received the tag of a national party, and that tag has never been lost in the last 72 years. ये हमको याद रखना चाहिए. कई दल बने, फिर उनका नेशनल टैग चला गया, रीजनल टैग भी बहुत मुश्किल से रहता है, पर जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक ये नेशनल टैग ऑफ बीइंग अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कभी भी नहीं गया. एक देयर यूज्ड टू बी एन अमेरिकन रिसर्चर, क्रैग बैक्स्टर. ये क्रैग बैक्स्टर इज द ओनली वन टू हैव रिटन अ बुक ऑन द जनसंघ. बाद में कई किताबें आए, पर 1968 में जब यह किताब पहली बार निकला, उस समय उनको शोध में सहायता दीनदयाल जी ने भी किया था, मलकानी जी ने भी किया था, अडवाणी जी ने भी किया था. उस समय जो सारे लोग थे, जेपी माथुर जी ने भी किया था. क्रैग बैक्स्टर लिख रहे हैं कि यह जनसंघ एक अद्भुत दल है. यह दल गठन के समय पहले चुनाव से 1967 तक, चौथा चुनाव तक, हर चुनाव में अपना सीट और अपना वोट शेयर यह बढ़ाता गया. एज अ रिजल्ट, formed in 1951, the Janasangh became the third largest party in the Lok Sabha by 1967. कांग्रेस का 78 सीट घटा 1967 में. That was the first blow to the Congress system. स्वतंत्र पार्टी जो कि राजागोपालाचारी जी के पार्टी था, उसको 44 सीट्स मिला, और जनसंघ को 35 सीट्स मिला, and more than 9% of vote share, and it became the third largest party in Lok Sabha. This party, when it won 3 seats in parliament, at that time the opposition, at that time the Congress used to laugh at Dr. Shyama Prasad Mukherjee. कहते थे कि आप 3 आपके 3, ऐसा कहते थे. And within 15 years of its founding, it became the third largest party. There is another record that the Janasangh holds, because please let us remember, जो श्री प्रकाश जी ने यहां कहा, एक मानसिकता है. इट इज नॉट दैट यू आर वांटिंग टू एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, बट यू वांटिंग टू एंड अ माइंडसेट. कांग्रेस का, जनसंघ का यह मानसिकता था कि हम सिर्फ अपोज करने के लिए नहीं अपोज कर रहे हैं. तो जैसे बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दीनदयाल जी's lectures, we are discussing his formulation of a political philosophy. So let us remember that the Janasangh had a unique distinction of having a political philosophy which was articulated after independence. The Communist Party of India was founded in Tashkent, और Communist Party of India के जो
उनके प्रेरणा स्रोत है, ये हम जानते हैं कौन है. द कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय एन इंग्लिशमैन. इट वॉज द जनसंघ which was founded after independence by an Indian, and then it had also a clear-cut political philosophy which was formulated after independence. And that is why we say that the Janasangh represented an alternate and a new political direction in independent India. Deen Dayal ji keh rahe hain that in his writing in 1952, January 1952, Deen Dayal ji is writing, and because we are, this is an intellectual exercise also. We have to read. So I would urge you to please, those of you who are interested, please go through 15 volumes of his writings and of his speeches. Somebody who was a full-time, hands-on, grassroots politician and organizer, was also a political philosopher, was a journalist, was an economic thinker, at the same time was a prolific writer. His writings and his speeches are contained in 15 volumes. तो आप पढ़िए उनको. वो कांग्रेस वर्सेस जनसंघ का एक लेख जनवरी 1952 में इलेक्शन कैंपेन जब चल रहा है, दीनदयाल जी इज राइटिंग एंड इज सेइंग दैट for the Janasangh, merely for the sake of, Janasangh was not created merely for the sake of opposition. We have to look ahead and not merely stand in opposition. The Janasangh did not exist merely to oppose the Congress. मुझे जब रुकना है आप बता दीजिएगा. I'll stop. The Janasangh did not exist, does not exist to merely oppose the Congress. The task of making the country happy and prosperous was foremost in his view. Not opposition for opposition's sake. From day one, this was the Janasangh's approach. This continues to be the BJP's approach. Throughout 50 years, please remember, it was the Janasangh and the BJP who spent 50 years in the opposition, 50 plus years in the opposition, and even then this party, this political movement did not see splits, did not dry up, did not stagnate. I think this is another record in the history of independent India. Now, by securing 3% of the vote, the Janasangh became a national party. और बहुत सुंदर है ये, आप देखिए ये सेंटेंस. KR मलकानी जी लिख रहे हैं, although the new party did not win too many seats, 3 सीट जीता था जनसंघ, it secured more than 3%, 3.06% of the popular vote and thus qualified as one of the 5 recognized national parties. उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कह रहे हैं देखिए. कह रहे हैं, उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित किया रिजल्ट्स के बाद, और उन्होंने कहा, we began with 0 but we have now got something plus everywhere. We have gained something and lost nothing. We have gained something and lost nothing. This was the start of Janasangh. 3 से 303 तक का जो जर्नी था, यहीं से शुरुआत हुआ. और अटल जी को अगर आप याद करते हैं 1957 जनरल इलेक्शन का, जब अटल जी याद कर रहे थे, so in his writings अटल जी saying in 1957 श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत हो गया था 1952 में, 53, और दीनदयाल जी के नेतृत्व में second general election was fought. And what was the condition then? Atal ji is writing, he's saying, neither was there a distinguished leadership, nor was there a wide mass base. Candidates were hard to find to fight the elections. There was no one who was willing to spend his own money to face forfeiture of security deposit. Even so, elections had to be fought. What better chance could there be to spread the message of the party to the vast masses to the maximum extent possible? श्री प्रकाश जी ने कहा, ऐसे कई कार्यकर्ता जिन्होंने कभी सोचा नहीं कि इलेक्शन लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो दूर का बात था, कैंडिडेट भी नहीं मिलता था इलेक्शन लड़ने के लिए. एक समय ऐसा भी गया.
Dindayal ji led the Janasangh after Dr. Shyama Prasad Mukherjee's death for 18 years. And in 1965, he articulated his philosophy. 1967, the Janasangh saw phenomenal success in the Lok Sabha elections. 1968, Dindayal ji passed away. मैं कभी सोचता हूं कि परम पूजनीय गुरुजी ने अपने जीवन काल में अपने दो स्तंभ जो थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, दोनों का ऐसे निर्मम तरीके से निधन को भी उनको देखना पड़ा. So you see, we were such a political movement whose pillars and leaders were suddenly removed from our midst at a very crucial time, at a very crucial period. And even then, this movement did not end. It did not, nobody could crush it. Now I'll quickly just go towards the, end perhaps because the session, and we have to also complete the session. तो एक तो मैं आपको आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, कांग्रेस वर्सेस द जनसंघ, इसको पढ़िए. इसमें बिकॉज दिस वाज रिटन इन 1952, दीनदयाल जी स्पीक्स about the foundations of our ideological foundations, and those ideological foundations remain undiluted, unshifted, unbroken even today. For example, he says that we can neither understand a secular state that is bereft of dharma. According to our principles, everyone would have the freedom to practice his faith, but the state shall be based on justice. Social justice का बात तब उस समय जनसंघ के नींव में social justice था. कई बात ऐसे वो कह रहे हैं. और the Bharatiya Janasangh does not oppose merely for the sake of opposition. It has come forth with a creative program and will certainly draw the support of the people. और वो कह रहे हैं कि false secularism का बात कर रहे हैं. And a false secularism cannot, it means a secularism, he says secularism cannot mean dharma pantha nirapekshata, cannot mean contempt for national traditions and the cultural life of a nation. A secularism that is based only on materialism can never match the nature and way of life of the people of our nation. ये इनका दूसरा एक संबोधन है. जब सह प्रांत प्रचारक के नाते ये उनका अंतिम भाषण था, उसके बाद he came to the Janasangh, and it is resolved to fulfill Shivaji's dream. Swarajya and Swadharma was the basis of Shivaji's politics, of his vision and of his empire. It is that we have to make basis for governance and for politics in free India, and that he is writing, he is speaking in June 1951, even before the Janasangh was founded. तीसरा लेख है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज चीफ ऑपोजिशन लीडर. श्री प्रकाश जी ने कहा, भाई साहब ने कहा कि उस समय किस आधार पे किस तरीके का राजनीति हुआ करता था. ये लेख इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस वॉज रिटन ड्यूरिंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीज लाइफ टाइम. इट वॉज रिटन ऑन हिज लास्ट बर्थ एनिवर्सरी ऑन 6th July 1952. On 23rd June 1953, Dr. Shyama Prasad Mukherjee passed away in Kashmir. दीनदयाल जी का ये लेख पढ़ना बहुत उचित है, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन क्या होना चाहिए और हमारा पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन क्या है. ही इज क्लियरली आर्टिकुलेटिंग दिस थ्रू दिस आर्टिकल. सो इफ यू लुक एट गवर्नेंस, if you look at parliamentary tradition, if you look at our approach to a political ideology, we were always different from other political parties. तो एक है, वो कह रहे हैं कि every MP is eager to listen to Dr. Mukherjee. Congress, opposition MPs are present to listen to him. जब सदन में बोलते हैं तो सब उपस्थित रहते हैं, कांग्रेस वाले भी रहते हैं, विपक्ष वाले भी रहते हैं.
विजिटर्स गैलरी जो होता है, इट इज पैक्ड. इवन कांग्रेसमैन accord due importance to what Dr. Mukherjee says because he articulates the language of their hearts. ये दीनदयाल जी लिख रहे हैं. वो भले बोल नहीं सकते हैं, पर उनको लगता है कि डॉक्टर मुखर्जी जो कह रहे हैं वो हम जो कहना चाहते हैं या हम जो अनुभव कर रहे हैं ये वही कह रहे हैं. एंड ही सेज everyone accepts him as their leader, in the sense we, that is Bharatiya Janasangh, that tradition that we belong to today, gave India's first opposition leader, even if it was an unofficial opposition leader. Everyone, whether it was socialist, communist or any other party, wanted Dr. Mukherjee to take the lead. ये बहुत इसलिए ये दस्तावेज, ये लेख बहुत अहम लेख है और मुझे लगता है कि हम सबको इसको पढ़ना चाहिए. बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि मैं व्यवस्थित आधा दिन में तैयारी भी करके आया था. इट इज नेशनल, नेशन फर्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी, नेशन फर्स्ट, भारत की अखंडता को सुरक्षित करना, ये हमारे, इट इज देयर इन आवर सिस्टम, इट इज देयर इन आवर ब्रेथ, इट इज देयर इन आवर फाउंडेशनल फिलोसॉफी. And that is why I'll just give you two examples. I'll not read because you look at Bangladesh Liberation War, that was after Deen Dayal ji passed away, and you look at the Goa Liberation Movement, because we are not very far, when Deen Dayal ji was present. The only political party, socialist कहते हैं कि उन्होंने भी गोवा लिबरेशन मूवमेंट किया, मधुलिमय जी, ये सारे लोग थे. जनसंघ का जो कंट्रीब्यूशन, और जगन्नाथ राव जोशी जी को अगर हम याद करते हैं, द मैनर इन विच ही वॉज टॉर्चर्ड, द वे ही लेड द गोवा सत्याग्रह आंदोलन, एंड कंट्री वाइड, द कंट्री वाइड सत्याग्रह एंड मूवमेंट दैट जनसंघ एस्टैब्लिश्ड एंड लेड फॉर द गोवा मुक्ति आंदोलन, I think can form a separate chapter altogether. That essentially came from this feeling that the nation is just not an inert piece of land, it is a Shakti, and that it reflects our aspirations. We are part of that, and therefore it needs to be akhand. And therefore 14 साल लगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ साल पहले सदन में उन्होंने कहा था कि भारत का स्वाधीनता को संपूर्ण करने में 14 साल लगा, क्योंकि गोवा आखिर में जाकर 1962 में लिबरेट हुआ. और 1955 दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ रेजोल्यूशन पास करके सत्याग्रह लॉन्च कर रहे हैं देश भर में. हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे, सरोजिनी नायडू के जो भाई थे, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय तब सीपीआई का मेंबर थे, इंडिपेंडेंट मेंबर, बट ही जॉइंड द जनसंघ सत्याग्रह. उन्होंने कविता, ही रिसाइटेड पोएम्स, ही sang songs in these programs. And in 1971, the Bangladesh Liberation War, we have to remember that in the Bangladesh Liberation War, the Janasangh made equal contributions also. It was the Janasangh which launched a 28-day countrywide satyagraha demanding liberation of Bangladesh. Hundreds and thousands of our karyakartas were arrested, and Atal Bihari Vajpayee ji, then leader of opposition, leader of the party in Lok Sabha, started using the term Bangladesh much before the ruling party started using it. And it was in June 1971 that Janasangh kept demanding that the government of India recognize Bangladesh as an independent country. That recognition came in December 1971. Friends, I wanted to tell you this much, that when Atulji told me that Deen Dayal Upadhyay and Dr. Shyama Prasad Mukherjee and the growth of the Janasangh till today, I thought I would share some of these pointers. It is also very important for us to remember that it is only in our political tradition where a party in its peak can merge itself
with a larger party for a larger cause, and the Janasangh did that in 1977 when the Janata Party was formed. किसी दूसरे दल का इतिहास में आप ये नहीं देखेंगे, जब मर्जर होता है तो जो दल दूसरे दल के साथ मर्जर होता है या तो बहुत वीक होता है या उसका अंत बहुत निकट है. सर्वाइवल इज ए प्रॉब्लम, एंड सो द पार्टी मर्जेस विद द अदर लार्जर स्ट्रॉन्गर पार्टी. बट इन दिस केस it was the stronger party which decided, for the sake of nation nationalism, for the sake of democracy, for the sake of the constitution, to merge itself to a cause, and the Janata Party was formed. So I think, friends, there are this whole entire year, as we commemorate Deen Dayalji's 60 years of his Vyakhyan Mala, I would urge all of you, especially my young friends, the young researchers, scholars, thinkers who are here, throughout this year, please make it a point to read Deen Dayal Upadhyay, to contextualize him, and to see how Manya Shiv Prakash ji has already told us, he gave us very pointed examples about how the country of his vision, how India of his vision is building up. So let us engage with his thoughts. He was a futuristic thinker, he was a pragmatic politician, he was a stellar organizer, he was a profound political philosopher. It is very rare that one comes across such a personality, and therefore Dr. Shyama Prasad Mukherjee had said, if I had one more Deen Dayal, I could have changed the course of India's history. And I think ultimately both Dr. Shyama Prasad Mukherjee and Pandit Deen Dayal Upadhyay could change the course of history. And it is because of their sacrifice, because of their relentless effort, that we are standing today. It is our kartavya. Lokatantra, lokakartavya. It is our duty, it is our kartavya to take it forward to the next level, to the next dimension. And that dimension is of Vikasit Bharat, and that dimension is of India emerging as a Mahashakti. Thank you very much. आपको बहुत धन्यवाद. आपने बहुत समय देके सुना है, धैर्यपूर्वक सुना है. Thank you so much. नमस्कार.